Hello everyone, good evening, happy Diwali. Happy Diwali everyone, happy Diwali. I hope you all can hear me. I can see people sharing about Muhurat Trading, stock picks. That's why we have this special session guys for everyone. We'll start the session in next 1 minute. Let's just wait for more people to join in and for our experts to join in. I hope you all are ready. You all are happy this Diwali, and we hope कि सबके portfolio 10x हो in the upcoming year. Happy Diwali everyone. Happy Diwali. काफी सारी विशेष आ रही हैं in chat. I hope everyone is at their home, happy, enjoying Diwali sweets. Your voice sound low. Okay, let me just increase. I hope you can hear me clearly now. Okay, great. Thanks for the confirmation. I hope आप सबने banners देखे होंगे about the experts who are going to join. So I'll set you a quick context of what's going to happen here. So we are going to start the session with our fundamental expert, Mr. Siddharth Khemka. उनको आपने हमारे कई सेशंस में देखा होगा. He's going to start the session. We are going to cover a few things. I'm not going to give you spoilers. Let the expert speak. Then we are going to move to our another expert, शिवांगी शारदा. आप सब जानते ही होंगे. हमारे सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनको आप सब ने काफी सारे इवेंट्स में, न्यूज चैनल्स में, हमारे मोतीलाल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा होगा. Along with these two experts, we have Ashish Ajodia sir, who is our commodity expert, and at the end we have, the person from Motilal Oswal, who is the flag bearer of our research team, Mr. Chandan Taparia, जिनको आप लोग regularly news channels वगैरह में and हमारे sessions में देखते हैं. So, Siddharth sir, I hope you can hear me. I'll welcome you to this live Muhurat Trading session. Happy Diwali. Yeah, hello. We can hear you, sir. Yes. Thank you so much. Happy Diwali. Just give me 1 second. I'm trying to set up. Sure, sir. Yeah. I hope our portfolio shines like a Diwali. That's the wish which everyone has here. Looking great, Siddharth sir. People are excited to know more about your views, and I hope you're excited to share them. Yes, So I guess बिल्कुल एकदम. सबसे पहले तो सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और यही आशा करते हैं कि संवत 2081 should be as rewarding and as prosperous for our portfolios as we have seen in the last few years. That I say because as we get into the new year of somewhat 2081, there are several challenges that we face and several large events that are lined up. For example, we'll start with the US elections in the first week of November. Then later the week, we will also have the US Fed meeting where after a sharp 50 basis points rate cut last time, there is slight expectation in the market that the Fed may not cut the rate this time around, given the macro data points that has come up. Later during the month, we'll have the state elections in Maharashtra, Haryana. These are key states to drive sentiments. Nothing major per se from an equity market perspective, but still, nonetheless, it will have a sentimental impact. Then we'll have the Delhi state elections in Feb next year. Before that, again, the buzz around the second budget from the government on the 1st of Feb, that will pick up pace. And in Jan, हम बहुत सारा again news flows or comments and commentary we'll see with regards to the government spending. Because अगर आप देखें तो इस साल जो है last 6 months जो इस financial year का first half है, यहाँ पर government spending has taken a back seat. And because as we entered the new financial year, the government got into the election mode, the code of conduct sets in, so you cannot do a lot of spending. And post that also the spending pickup is only a little bit slower this time. So hopefully
by in the second half we'll see a lot of excitement towards uh, the the government spending picking up. So उससे related बहुत सारे sectors हैं जो PSUs हैं, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग ज्यादातर केपेक्स स्पेंडिंग होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, कंस्ट्रक्शन साइड में, कैपिटल गुड्स सेक्टर, ये सब पे थोड़े बहुत तो अगेन बज देखने को मिलेगा. सो दैट इज समथिंग दैट विल keep the excitement buzz around. Another key factor that to watch out for in this new year would be the RBI and its policy rates. So we all know that US Fed has already started the rate cut cycle. So we'll also see hopefully sooner or later by the RBI also. So interest rates in the domestic markets will also we will witness a cut, and that could also lead to some positive sentiments for equity. एंड फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम हर बार बोलते हैं कि मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज होता है, वो है अर्निंग्स, अर्निंग्स और अर्निंग्स. तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो आफ्टर 4 years ऑफ हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ, वी आर विटनेसिंग मॉडरेशन इन द अर्निंग्स ग्रोथ. Q2 नंबर्स आ रहे हैं और अभी तक जितनी कंपनियों ने नंबर अनाउंस किया है, टू बी ऑनेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए नहीं है. लार्ज कैप्स में काफी कंपनियों ने नंबर्स में डिसअपॉइंट किया है, एंड वो हमने देखा कि मार्केट ने कैसे पनिश किया है सम ऑफ द लार्ज कैप्स which were down 5-10% after the results. So overall earnings momentum has slowed down. What is also weak is that the management commentary with regards to the third quarter, which is generally the very strong quarter because of the festive season we had. The festive season starting with the Ganpati, Ganesh Chaturthi, then followed by Navratri, and then we had the Diwali season, and then last November, December we have the Great Indian Wedding season. So ये सबसे consumption boost मिलता है, but थोड़ा सा commentary हमको weak मिला है. So let's see how that pans out. But having said that, valuations have also kind of come down with the market correcting about 7-8% from the top. So we are closer to the long-term average, but nonetheless, I would say that there is a tug of war in the market between the headwinds and the tailwinds. So the positives और negatives है, क्योंकि globally काफी factors हैं, domestic में काफी factors हैं, positive factors भी हैं, but there are definitely a lot of factors which are concerning. Apart from the corporate earnings which are kind of slowing down, we saw huge FI selling in the month of October, more than 1 lakh crore. Okay, this is one of the highest selling ever we have seen in a single month. हमने previously भी देखा FI selling in the COVID era. Then we saw FI selling when the interest rate hike cycle started in 2022. But none like this in one single month. That is the aggressive nature. But one thing that we also need to keep in mind is that the size of the Indian market is so huge that the selling amount on an absolute basis will become larger and larger. So while we all are aspiring that Indian economic size, GDP will cross the $5 trillion economy in the next few years, the equity market or the market cap of Indian equities, that has already crossed the 5 trillion mark, and we are among the large few markets globally. So that is something that we need to keep in mind of. So finally, क्या लगता है market में? So जैसे मैंने बोला, there are a lot of several factors. So in the near term, while the pressure on the market could continue, don't expect a large fall from here. Another 3-4% correction may happen, but this is a good time to look at stocks, sectors where earnings are strong, valuations are comfortable. ये हमें टाइम दे रहा है एक्यूमुलेशन करने को, क्योंकि हमने जो बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि मार्केट रुक ही नहीं रहा है, वेट ही नहीं कर पा, हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हमको अपॉर्चुनिटी है मार्केट में वो सेक्टर्स को देखना, एनालाइज करके निकालना, स्टॉक्स को निकालना और उसमें इन्वेस्ट करना. तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड होगा. उसके बाद अर्निंग साइकिल शुड रिकवर. वी आर एक्सपेक्टिंग जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल बढ़ेगी. सो पॉजिटिव साइड में इंटरेस्ट रेट
इंडिया में लो होंगे, जिससे कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल को स्पर मिलेगा, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा. इससे दिस ईयर वी हैव सीन आफ्टर 2 years ऑफ वीक मॉनसून, दिस ईयर मॉनसून हैज बीन सरप्लस, सो दैट इज अ बिग फैक्टर. इलेक्शंस के बाद जनरली अगर आप देखें तो रूरल सेक्टर में एक ग्रोथ आती है. जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज फॉर लॉट ऑफ कंज्यूमर नेम्स, दे आर सेइंग दैट कि अगेन आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल rural demand is outpacing the urban demand. So these are factors which will help revive the demand. So going forward, we are expecting next 2 years earnings growth in the zone of 12 to 15%. So market से हमें भी उतना ही expect करना है. अगले 3 महीने 6 महीने, जैसे मैं बोला कि अगले 2-3 months market can consolidate and then we can see some rally towards the, so generally जनवरी में थोड़ा budget rally होगा, markets थोड़े correct हुए हैं तो वहां से थोड़े बहुत और value buying भी emerge होगी. So that is also positive. So ओवरऑल आप मार्केट से थोड़ा मॉडेस्ट रिटर्न एक्सपेक्ट करिए. जो लास्ट 1 year है, निफ्टी ने 26% रिटर्न दिया, मिड कैप स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 40% रिटर्न दिया है. तो ये हाई बेस पे अब यहाँ पे 12 to 15% return from Nifty is what we are expecting. There are several sectors which could do well. I will just share my screen so that people can Sure, see. sir. I guess that was my next question कि आपने एक बेस तो सेटअप कर दिया है कि लास्ट 1 year में क्या हुआ and what is expectation for next 1 year. But what are the factors and how, what's going to be the theme for next 1 year? That was my next question, in fact. तो ये हमने एक अच्छा रिपोर्ट भी निकाला है दिवाली के अराउंड, व्हाट इज द आउटलुक. So some of these events that I spoke about, the outlook. So now as I said कि जो सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहला जो है वो बैंकिंग सेक्टर. उसमें भी प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें तो नंबर्स बैक टू बैक अच्छे आए हैं, पीएसयू बैंक्स के नंबर अच्छे आए हैं, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है. सो बैंकिंग एज अ ओवरऑल सेक्टर वी बिलीव can be the leader of the next cycle. While market may not do well, Nifty may be sideways. You will hear Chandan sometime later in this call today. So he is very bullish on the banking index. So Bank Nifty will outperform, is likely to outperform Nifty over the next few months. So that is a space that we are liking. Financials, as I said. The second theme that we like is the digital space. So that is a theme that we believe can consistently deliver high growth in this environment. So digital is a large theme. It includes some of the tech companies. It includes your telecom companies, which are providers. It includes digital infrastructure companies, e-commerce, quick commerce companies. So ये एक whole gamut of space है जिसमें digitally because what happens is even if you are considered digital में आज के दिन में we are considering the capital market companies, because what happens is the moment you are able to give your services digitally, the growth can be unlimited. It is not capacity constraints. We are seeing that the kind of numbers that this sector can deliver easily 30-40% kind of growth can be achieved in this space. So you also have the electronic manufacturing, which comes under industrials. So the next theme is defensives. In this environment where market is likely to consolidate, we expect some of the discretionary spending to continue. For example, अभी wedding season आने वाली है, तो वहाँ पर हमें लगता है jewelry companies already they are reporting strong numbers that could continue to do well. Some of the other discretionary spending, for example, real estate is seeing consistent growth in demand. So that is another space that we like. Healthcare is another space where consistently earnings growth are there, and in this environment एक defensive bet बन रहा है. टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी बोल लिया, जो डिजिटल के अंदर आ रहा है. जो एक सब सेगमेंट है ऑफ डिफेंसिव, जो एफएमसीजी है, वहां पर अभी थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ चैलेंजेस आ रहे हैं, मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर है, डिमांड आउटलुक थोड़ा सॉफ्ट है. तो दैट इज वन स्पेस दैट वी विल अवॉइड. But as I said, the other consumer discretionary, larger spending items, ticket items, that is something which is witnessing growth. And finally, industrials. I was talking about the upcoming budget theme. So you will have a lot of make in India kind of stocks, capital goods, construction, infra companies, those kind of segments, electronic manufacturing segments, data centers, energy transmission. So those kind of things, sectors will do well. So ये themes हैं जहां पर growth अच्छी आने वाली है, valuation comfortable है, and we expect them to lead the next phase. So finally, coming to my last slide, what stock picks. So within the financials,
we like ICICI Bank, 5 star within the mid cap space, and Angel One in the capital market theme. In the digital space, we like HCL Tech and Zomato. So HCL on the tech side, Zomato on the e-commerce and quick commerce space. In the defensives, Titan market leader in the jewelry segment. Valuations are comfortable. You can also look at some of the other companies in the space, including Kalyan Jewelers, Senco Gold. Pharma is something that I said, talked about. You have the large cap pharma, Sun Pharma, DV, Cipla, which is doing well. We have looked at Ipca Labs, which is a leading API manufacturer, consistent growth, earnings, valuations comfortable. Within industrials, we have three companies: L&T, the largest infra capital goods company in India. Amber Enterprises is an electronic manufacturing company likely to benefit from the discretionary spending growth in the AC market. It is also getting into some of the other electronic segments. So all round improvement in numbers. And finally, we have Zen Technologies, which is anti-drone manufacturer from the private defense space, which we believe can do well. So with that, I leave the floor open for any questions. Thanks a lot, Siddharth sir, for sharing the fundamental and a long-term view. I agree कि हमारे जो community members हैं वो generally जो intraday traders and option traders हैं, but we have a lot of people who are switching and going towards the investment side considering the current market scenarios. Thanks a lot for sharing that. And I believe the information in the report जो आपने and आपकी team ने बनाई है, that will be really helpful for them in the long term. So I guess, sir, thanks a lot for taking out time on Diwali and spending your valuable 15 minutes with our community members. So that will be all, sir. We'll connect you later for another session. And Thank you guys, so much. all the information. And wishing everyone a very happy and prosperous Samvat 2081. Thank you. Thank you, sir. And now I guess it's time to invite our next speaker, Shivangi Sharda, to the stage. Shivangi, ma'am, I've sent you a request to join. Please accept that. Shivangi, ma'am, can you please accept the request which I have sent you? Good evening, ma'am. I hope you can hear me and see me. Good evening. Thank you so much. Yes, I can hear you and I can see you. Wish you all a very happy Diwali to all our community members and listeners. Wishing you that this year is filled with sparkle and your portfolio keeps shining throughout. Happy Diwali, ma'am, and it's great to see you here. And I guess I was on leave, so I did not connect with our members, and I'm really happy to connect with all of them on the occasion of Diwali. I guess we won't, waste much time. We'll directly hop onto the questions. So, Siddharth sir ka agar aapne suna ho, the knowledge which he has shared, so he has covered more or less the long-term view, right? I would like to know the short-term view of the market, and do we have any trade right now? Like, I guess this is the question that everybody wants to ask you right now. Yes, thank you so much. And बहुत सारे messages are there. You guys are like the sweetest. Okay, so let's just dive into what is happening in Nifty. I'm, obviously Siddharth sir ने बहुत ही enriching session लिया and हमें पता है कि from his session we know that what we have to watch out for and expect from the market in the next 6 months to 1 year. बट ऑफकोर्स अगर हम इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी है मार्केट में वी हैव सीन सम बिट ऑफ अ करेक्शन एंड दिस करेक्शन हैज बीन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द लास्ट 4 years. तो काफी सारे स्टॉक्स जो है वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं. हम सब शॉपिंग जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि डिस्काउंट में सब मिले. So I think this is the perfect time to get your investment started at these levels. कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं अभी. Right. So let's just dive into what's happening in Nifty first. और फिर मेरे पास कुछ sectors है, कुछ stocks है जो काफी positive लग रहे हैं for the near term future, which you can look out for. So I'm just quickly sharing my screen. This is what Nifty looks like today. We have seen that, of course, आज equity पे ज़्यादा focus रहेगा, but we'll discuss the strikes if there is any trade at all. So Nifty, we've seen that from the last 5-6 sessions, it has respected
24,000 level. So that has become like a make or break zone over here. I believe there is going to be some volatility till the election, the US elections that is expected. और जब तक वो सेटल नहीं होता है, जब तक उसका न्यूज वगैरह डिस्काउंटेड नहीं होता है, थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी. आप अगर देखो, इंडिया विक्स हैज आल्सो रिजन above you know almost 15.5 16 लेवल्स पे चला गया था. तो 16 के ऊपर जाना थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला बात जरूर है फॉर द मार्केट. But the good part is that it has been consolidating from the last 4 to 5 sessions. तो यहाँ से कोई ग्रेव डाउनसाइड नहीं नजर आ रहा है फॉर द नेक्स्ट few sessions. But 23,750 positionally for November series जो कि हम शुरू कर रहे हैं will be important to watch out for. एंड अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे 24,500 पे काफी कॉल राइटर्स है. 24,500 विल बी difficult to cross. Even you must have seen from the last 5 sessions, 24,500 क्रॉस करना मुश्किल हो जा रहा है. 24,498 तक गया था इंडेक्स, but it couldn't cross 24,500. So somewhere this level is like a immediate hurdle for Nifty. और उसके बाद जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,200 तक के लेवल्स. November slightly goes a little mixed for Nifty अगर हम seasonality wise 10 साल के डेटा को देखें. और FIs काफी सेलिंग भी किए हैं in the October month. So some sort of domino effect will be there in the market, but overall stabilize होते हुए दिख रहा है, वो अच्छी बात है. And इस correction में भी हमने देखा है that some of the stocks are now taking support. Base बन रहा है अच्छे sector stocks में. और कुछ pockets है जो बिल्कुल underperform किए हैं from the last 2 years have now started moving. For example, the first sector which has started moving is Bank Nifty. We all know what kind of a short covering move Bank Nifty has seen in the last 2 weeks itself. और जितना Nifty गिरा है उतना Bank Nifty गिरा नहीं है. So that is also like a positive indication that how banks are looking quite positive. Banks में भी अगर हम देखें, then some of the private heavyweight frontline stocks are looking good, and some of the heavyweight PSU banks. तो आपको ज़्यादा focus heavyweights पे करने हैं, smaller names पे नहीं. And the entire focus somewhere will be obviously on banks, but NBFCs में insurance based stocks are looking quite good as well. I remember Siddharth sir ने अभी just ICICI Bank की भी बात की. So even for the short term perspective, ICICI Bank is looking quite positive. ये सारी stocks जो मैं अभी mention कर रही हूँ, वो आप for the next 1 to 2 months के लिए देख सकते हो. For trading purposes से भी देख सकते हो. And these are going to be some good stocks. अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करो, आई थिंक द आइडिया इज टू गेट योर हैंड्स ऑन गुड स्टॉक्स. एंड आई बिलीव ये करेक्शन के टाइम पे ये सारे स्टॉक्स अच्छे प्राइसेस पे भी मिल रहे हैं. So I think it's a win-win for all of us. So quickly, if I have to mention banking में और insurance में, banking में आप heavyweight, private और PSU stocks को देखना जो frontline है, जैसे ICICI बैंक हो गए, SBI हो गए, ये stocks जो है वो अच्छे लग रहे हैं. And from the insurance space, some of the stocks like HDFC Life is looking quite positive. So you can focus on these stocks. Now, quickly, I want to come to the capital market space as well. हमने देखा है कि BSE या MCX या CDSL जैसे stocks में dream run हुआ है from the last 2 months. And even despite the market volatility, despite the kind of hiccups that we've seen, the correction that we've seen, these stocks have held on to the higher zones. और इनमें एक अच्छा खासा strength बना हुआ है. Right, so my focus will be on some of the capital market related stocks. Of course, BSE is looking quite good at these levels also. अगर आप ये चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो एग्जैक्टली एक लेवल पे रिट्रेस करके वापस बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से इमर्ज हो रहा है. So BSE is one stock which is looking quite positive. Okay, one can also look out for MCX क्योंकि यहाँ पे भी काफी टेक्नोलॉजी ओवरहैंग का देखने को मिल रहा है. And the kind of activity these exchange activities which we are seeing on these exchanges are
ट्रिमेंडस। तो BSC, CDSL, MCX, ये 3 स्टॉक्स आप देख सकते हो। कुछ ब्रोकर रिलेटेड स्टॉक्स भी है, ऑफ कोर्स वी आर कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकरेज हाउस, so disclaimer, disclosures all applied, but these sectors and these stocks are looking quite positive, तो इनको भी आप focus करना। And next sector, so we spoke about 2 sectors till now. The next sector which is on my radar is sector नहीं है, but आप बोल सकते हो stock है। Bharti Airtel is looking quite positive to me. Okay. And from the entire telecom space, we've seen that this stock is one of the strongest, and of course काफी stable है अपने peers से related। And Bharti Airtel में हम देख रहे हैं कि of course there has been a correction from the last 2 weeks, but it has been very slow and steady. And जिस तरह से स्टॉक में सपोर्ट बेस्ड बाइंग इमर्ज हो रहा है, अगर मैं वीकली बेसिस भी देखूं तो ये अपने 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को एक अच्छा बेस बनाया है। 1600 के 1600 पे ही हमने देखा है कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है। So Bharti Airtel is one another stock which is looking quite positive and one can look out for. So I think summary wise, आपको बैंकिंग हैवीवेट प्राइवेट और PSU लाइक SBI वगैरह देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द इंश्योरेंस बेस्ड स्टॉक्स आर आल्सो वेरी गुड, एंड आप HDFC लाइफ देख लो या आदित्य बिरला देख लो। फ्रॉम द कैपिटल मार्केट स्पेस एंड एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स, दोनों ही क्लबिंग टुगेदर बोथ ऑफ देम, बट both the spaces are very positive. And from the telecom, you can look at Bharti Airtel. So this is the summary of the stocks that I have, picked out for. And काफी एक scanning के बाद ये सारे stocks हमने लिए हैं. And in fact, Avinash has just put it on the chat box as well. उसने पिन कर रखा है, तो आप ये जरूर रडार पे रखो. And these stocks are not just for today, but for the next 1 to 2 months. तो ये आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो या पोजिशनली भी ले सकते हो. एंड मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज आफ्टर द US इलेक्शन आउटकम्स. सो टिल देन देयर विल बी सम वॉलेटिलिटी. ऑफ कोर्स हमारे जो एवरीडे के सेशंस होते हैं उसमें आपको एक काफी डिटेल्ड एनालिसिस और हैंड होल्डिंग मिल जाएगा. बट फॉर टुडेज सेशन, इफ वी आर लुकिंग एट निफ्टी, आई जस्ट क्विकली रन थ्रू निफ्टी. ये इसका डेली चार्ट मैंने किया है. सो ऑफ कोर्स आज एक शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग है और हम देख रहे हैं कि 24,300 के ऊपर होल्ड कर रहा है इंडेक्स. एंड देयर इज बिट ऑफ अ कंसोलिडेटिव मूव. ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट 1 घंटे में आप ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट one can look out for 24,600 का एक कॉल ऑप्शन. बट we are not expecting much of a एक बहुत अपस्विंग या वॉलेटिलिटी वाला मूव हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इंडेक्स इज इन अ रेंज. अगर आप इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट भी देखो तो इट्स मूविंग इन अ वेरी फेयरली स्मॉलर रेंज. अभी तक हमने लगभग 150 पॉइंट के रेंज में ही मूवमेंट देखा है. सो somewhere some sort of a range bound move, but one can look out for 24,600 call. आप ये भी कर सकते हो, you can do a bull call spread for this Muhurat point of view. So one can look out for buying 24,600 call and selling 24,750 call option. So this is one bull call strategy that you can do. ये आपको लगभग 30 to 35 पॉइंट्स के प्रीमियम में बैठ रहा है. And this is the maximum risk involved in this strategy. And I'll just tell you the maximum reward as well. So maximum reward that you can expect is 120 points from this strategy. So this is one bull call spread that you can look out for. Yes, so this is focus on these sectors, focus on these strategies, and I think this will help you. So Anuj, I think over to you if there is any questions at all. We have a few questions, ma'am, but we'll start from a very basic question. What is Samvat 2081? I guess we have a few new people, so the question they are asking is what exactly is this? We are talking about हमने reports में भी देखा, सिद्धार्थ सर ने भी उसके बारे में बात की, but what is this exactly? Okay, so I'll just tell you the significance of Muhurat trading first.
ये हर साल दिवाली पे हम करते हैं. Of course, this dates back, to very long back. और ये एक Diwali is obviously a very auspicious and special day which is celebrated across India. तो यहाँ पे इसका जो महत्व है, इसमें जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, इसका आई थिंक इम्पोर्टेंस हम ज्यादा समझ पाएंगे एज बीइंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स. तो यहाँ पे we do Muhurat Trading, as a token of starting a new investment journey for the next 1 year. And it can be investment, it can be trading. Of course, investments पे focus रहता है. And the idea is that एक बहुत ही auspicious day में हम एक नए trade के साथ start कर रहे हैं. So the it's a shubh trade, it's a auspicious trade that we do on this Muhurat Trading. Of course, this dates back when ring में जाके सब shares trade करते थे. Of course, today with this live platforms and this community live, we are all connected from different parts of the country. But of course, it's a special feeling. And न्यू संवत बेसिकली सिग्निफाइज कि सपोज आपने जो पुराने साल में जो भी आपने ट्रेडिंग मिस्टेक्स किए हैं, आई थिंक यू शुड लुक एट इट दिस वे दैट नया संवत शुरू हो रहा है, आप नए जोश के साथ नए मिस्टेक्स जो आपने किए हैं उसके एक नए सीख के साथ ये स्टार्ट करो. Like you should have better risk management, which is very important in both investment and trading. तो आपने जो भी गलतियां की है उससे सीखो, आगे बढ़ो, because it's important to make mistakes, but it's more important to learn from those mistakes. So I think this is my message for the new Samvat. And of course, जैसा सिद्धार्थ sir ने बोला भी था कि we have somewhere seen abnormal returns in the last 2 to 3 years post COVID. So कहीं ना कहीं ये returns जो है वो normalize होते हुए दिख रहे हैं market में. I think the best way to look at the market for the next 1 year is not to expect abnormal returns, but to expect good stocks to move. And जैसा कि मैंने कहा कि इस करेक्शन में अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं अच्छे स्टॉक्स के, तो उनको आप देखो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए. सो आई बिलीव this is what you should expect from the market, and always look out for the outperforming names. तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ के साथ बने रहना पड़ेगा, ये एक मार्केट का मैसेज है. बिकॉज even in the last 1 month, even after such a correction and volatility in the market, कुछ stocks ऐसे रहे हैं which have not got affected at all with this market correction. So this is a clear sign that you have to stay with the strength, you have to stay diversified, you have to do your risk management properly to be able to excel and stay alive in this market. Ma'am, we have another question. जो bull call spread आपने दिया है, is it for weekly or a monthly expiry? This is for the weekly expiry, जिसका 7th November को expiry है, which you can look out for. Because अगर हम monthly जाए, there will be less movement. So if you're looking for a immediate trade, इसलिए मैंने एक weekly expiry का ही आपको suggest किया है. But of course, if you have a positional outlook और आपको थोड़ा और positional trade लेना है, तो आप monthly भी ले सकते हो by coming little near at the money strike. Got it. So, if I just sum up, we have received our first trade, of the Samvad of the new trading year, and we have also received the first investment trade, that is conviction delivery idea HAL, जो हमारे CMP में हमें buy करना है 4273, stop loss will be 4038, and the target will be 4745. Short term view में the stocks which you have mentioned is ICICI Bank, HDFC Life, BSE, MCX, CDSL, and Bharti Airtel. So this sums up our last 15 to 20 minutes. Thanks a lot, Shivangi ma'am. I hope to see you again on a live trading session soon. Is there anything else that you'd like to add before we move on to our next expert and have Ashish Ajodia sir on stage? I believe wishing you all a very sparkling year ahead. And 2025 आने वाला है, which is going to be a very special year because the numbers just add up very well. So guys, focus on your investment journey. I believe if you stay in the game, then magic of power of compounding is always going to bless you.
लोग कहते हैं कि लक्ष्मी ब्लेस करती है उन्हीं को जिनके पास पैसे होते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू. I think, Lakshmi is in the form of magic of power of compounding. So the more you hold on to good stocks and the more you do your risk management, आपकी लक्ष्मी जरूर आपके पास रहेगी, right? So I think this is my best wishes to all of you here. Stay connected, and obviously we are all here to help you in this investment journey. Thank you, Shivangi ma'am. Thanks a lot for joining in, and happy Diwali from Stockholm team, and especially from me. See you again next week, and hoping for a profitable year for everyone. Ashish sir, I've sent you a request. Please join in the stage. Ashish sir, can you hear me? Yes, sir. We can see you and we can hear you. Good evening, sir. Happy Diwali. Uh, Very good evening, Anuj, and very happy Diwali to everyone. This year's Diwali is actually a golden Diwali because if you know that gold has given a return of around 34% this year, and of course we'll talk about silver as well. So yes, of course, this year commodity market has given a very good return. So I'll quickly share my screen and we'll see what has happened in commodity segment. Sure, sir. And for the people asking when will Chandan sir join, after Ashish sir, we'll have Chandan sir to take up your queries. I know कि काफी सारी queries आ रहे हैं. We are trying our best to summarize the entire thing and take the session forward. But don't worry, we have a Stockholm platform. You can share your queries there, and we'll be happy to answer. Ashish sir, over to you. I guess we only have one question. Matlab, obviously, you're going to give a very quick overview of the entire segment, but how is gold and silver going to perform and how it has been performing for the last 1 year? That is the only question which I have on the behalf of our members. So yes, Anuj, is my screen visible? Yes, sir. We can see the commodity performance Diwali to Diwali. Yes. So this is a report that we had published a few days ago. Diwali se Diwali tak. And in this particular report, we have mentioned about which are the commodities that are looking attractive for the next Diwali, from this Diwali to next Diwali. And I just want to show you the performance of commodities from the past Diwali to this Diwali. Yes, of course, I mentioned this year's Diwali is a golden Diwali. You can see the return. पिछली दिवाली से लेके इस दिवाली तक आप देखोगे 60,000 के अराउंड गोल्ड के प्राइसेस थे एंड 78,000 रुपीस के अराउंड मार्केट ने क्लोज दिया है गोल्ड ने एमसीएक्स पर. सो यू कैन सी 31% का रिटर्न है गोल्ड में एंड यू कैन सी सिल्वर ने एक्चुअली बाकी सारे कमोडिटीज को आउटस्पेस किया है, आउट परफॉर्म किया है सिल्वर ने. एंड सिल्वर का जो रिटर्न है दैट इज अराउंड 36%, राइट. सो इस साल बुलियंस का ईयर रहा है और आई कैन डेफिनेटली से कि गोल्ड एंड सिल्वर ने वर्ल्ड में जितने भी सिक्योरिटीज है उनको आउटस्पेस किया है इस बार. एंड कंटिन्यूसली लास्ट 4 years से वी कैन सी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. आई विल सी व्हाई द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर राइजिंग कंटिन्यूसली. ऑफ कोर्स जो इसकी स्टार्ट हुई थी, before I explain the reasons, for this year we have these peaks for next Diwali. इस दिवाली से लेके नेक्स्ट दिवाली तक सिल्वर हमारा एक पिक अभी भी है. We still expect the silver prices will keep on rising. There are various factors that will drive the prices of silver towards 1,25,000. Of course हमारा जो पहला टारगेट है वो शगुन का 1,11,111 का टारगेट है हमारा फर्स्ट. एंड द सेकंड टारगेट वी आर एक्सपेक्टिंग इज 1,25,000. अगले साल तक वी आर एक्सपेक्टिंग मोर 30% फ्रॉम हियर. ऑलरेडी प्राइसेस आर अप बाय 37%. सो सिल्वर प्राइसेस आर गोना राइज फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल. सो दैट इज आवर दिवाली पिक. सेकेंड इज जिंक. जिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से
265 से और 100 रुपए तक की बढ़त देखी जा सकती है एंड ऑलमोस्ट 30 से 33% का अपसाइड पोटेंशियल है। एंड द लास्ट वन इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बहुत सारे फैक्टर्स है, आई एम गोना एक्सप्लेन। 200 के प्राइसेस से अभी 380 या 400 के लेवल तक वाई वी एक्सपेक्टिंग। आप रिटर्न्स देख सकते हो, 73% वी एक्सपेक्टिंग कि इस साल नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट? So we'll see why these gold and silver prices are rising. There are major three reasons because of which the gold and silver prices are rising. I would like to throw some light on geopolitical risk. 2022 में रशिया एंड यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, राइट? एंड एज वी नो, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर सेफ हेवन एसेट, राइट? तो जब भी ऐसी अनसर्टेनिटीज आती है या जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है, वॉर सिचुएशंस क्रिएट होती है, उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस काफी ज्यादा शूट अप होते हैं। एंड 2022 से अगर आप 2024 2 साल का रन अप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर का, डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। So I guess around 40,000 50,000 we were in 2022 gold की prices अगर मैं बात करूं, and we are almost near 80,000, and for silver we were around again 55,000 or something, and we touch new all time high for silver. Silver लाख के पार गया है. We had also published our report. 78,000 पे हमने अपनी पब्लिश की थी रिपोर्ट, जब हमने बताया था कि सिल्वर लाख के पार जाएगा, एंड लाख का जो लेवल है, ये लेवल रिसेंटली सिल्वर ने टच किया है. सो विल सी कि और क्या फैक्टर्स है, सिल्वर यहां से और कितना ऊपर जाएगा. एंड रिसेंटली आप देखोगे कि और भी ईरान एंड इजराइल के वॉर चालू है. सो ये ऑन गोइंग जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ये ऑलरेडी बूस्ट कर रहे हैं प्राइसेस को. मे बी चाइना आगे जाके ताइवान पे भी अटैक कर सकती है. सो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी मार्केट में है. ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट इज राइजिंग, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द सिल्वर एंड गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग. Second major factor is Fed interest rate decision, and recently आपने देखा होगा कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट्स करने चालू किए हैं. प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कंसर्न था. ऑलमोस्ट 9% के ऊपर इन्फ्लेशन गई थी, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था. सो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कोई भी इकोनॉमी अपनी इंक्रीज करती है, सो उस टाइम पे उस कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होना चालू होती है. सो जैसे जैसे यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, वैसे वैसे जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई. एंड एज वी नो, यूएस डॉलर और गोल्ड में इनवर्स रिलेशन है. सो वो जो पीरियड था उसमें काइंड ऑफ गोल्ड एक स्लगिश मूव में था, बट अब यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट किया है. दे हैड ऑलरेडी कट इंटरेस्ट रेट, और आने वाले फेड के मीटिंग्स में वो लोग बोल रहे हैं कि दे आर गोना कट मोर इंटरेस्ट रेट्स. सो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे, उनकी जो करेंसी की वैल्यू है दैट विल गो डाउन. अब फ्रेंड्स, मैं अगर इसके ऊपर ज्यादा लाइट थ्रो करूं तो कैसा होता है कि जब भी कोई कंट्री इंटरेस्ट रेट कट करती है तो इन्वेस्टर अराउंड द ग्लोब वो पर्टिकुलर कंट्री जो इंटरेस्ट रेट कट कर रही है उनके बॉन्ड मार्केट में से पूरा पैसा विड्रॉ करते हैं. एंड एज इन हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो हेवी लोन लेते हैं एंड एक्सपांड करते हैं बिजनेस को. एंड इन दैट केस जितने भी स्टॉक्स है ओवर द ग्लोब या फिर जो पर्टिकुलर कंट्री इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, उस टाइम पे आपके स्टॉक्स अच्छे कैसे परफॉर्म कर. सो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल के स्टॉक्स में जाता है, एंड बॉन्ड मार्केट से जब पैसा निकलेगा तो उनकी करेंसी की वैल्यू और नीचे जाती है. एंड ऑफ कोर्स करेंसी की वैल्यू नीचे जाना और इंटरेस्ट रेट को कट करना, ये ऑफ कोर्स उनकी करेंसी के लिए नेगेटिव है, और वो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है. सो ये रीजंस है जिसकी वजह से हमने सिल्वर एंड गोल्ड में अभी भी जो रैली है वो कंटिन्यू है. ये सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर रहेगा आगे की रैली के लिए. जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट और कट्स होंगे, वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही अच्छे मूव्स देखे जाएंगे.
फेड ने जो इनका इंटरेस्ट रेट है सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट से कट किया था, और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में थी, लेबर मार्केट कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया है, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में अच्छे खासे मूव देखे गए हैं। रिसेंटली चाइना ने भी काफी टैरिफ्स को ईज किया है, और यूएस चाइना जो टेंशंस है, वो जो डेट है, वो सारी चीजें बढ़ रही, इनके ये सारे रीजंस की वजह से, एंड जो डेटा है यूएस के वो काफी वीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में तेजी देखी गई है। Now, friend, So of course, since yes, please. I'm really sorry to interrupt. Actually, we are getting many queries. तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि हम कुछ queries को भी ले लें while you're बिल्कुल, explaining. बिल्कुल। So since you were explaining about gold and silver and the move which we'll see in the upcoming year, so we have some questions. Sir, should I add more gold and silver to ETF? And is it a good time to buy gold? सो फ्रेंड, ऑफ कोर्स मैंने ये चार्ट आपके लिए रेडी रखा था। रीजन आई न्यू कि आप लोग ऑफ कोर्स पूछेंगे कि आपने आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में 20% ऑफ द गोल्ड रहना ही चाहिए, बिकॉज यू नो रिसेंट जो सेल ऑफ आ रहा है, वी डोंट नो कि इक्विटी में वो कब खत्म होगा या कहां तक कंटिन्यू होगा और क्या चीजें आने वाली है, वी डोंट नो एनीथिंग, राइट। अनसर्टेनिटी है, यहाँ से मार्केट में भी 12 और 15% यहाँ से और बढ़ सकता है, या फिर ड्रॉप भी हो सकता है, बट गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। यू कैन सी द चार्ट ऑफ गोल्ड, दिस इज द मंथली चार्ट, एंड कंटिन्यूअसली द प्राइस ऑफ गोल्ड इज राइजिंग। नथिंग कैन स्टॉप द प्राइस ऑफ गोल्ड टू राइज, इवन दो हमने काफी अच्छे फेजेस भी देखे हैं लास्ट 20 इयर्स की। अगर मैं बात करूं, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में तो गोल्ड ऑफ कोर्स बढ़ता ही है, एंड बहुत अच्छे फेजेस में भी हमने देखा है कि गोल्ड बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, स्टेबल रहा है, राइट। सो करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड टेक्निकली अभी एक चैनल के रेजिस्टेंस पर है, राइट। प्रीवियसली जब हम 2020 में थे, 55,000 से गोल्ड ऑलमोस्ट 46,000 के अराउंड आया था, ऑलमोस्ट 10% का फॉल आया था। अभी भी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से गोल्ड लगभग 80,000 या 81,000 तक जाने के चांस है, और मैक्स वी आर एक्सपेक्टिंग 82,000। हमने क्वार्टरली रिपोर्ट भी रिलीज किया है, बट फ्रेंड्स यहाँ से ऑन द हायर साइड 2 या 3 हजार रुपए का अपसाइड एक्सपेक्टेड है, बट आपको अगर ऐड करनी है पोजीशंस, यू शुड वेट, बिकॉज टेक्निकली भी थोड़ा सा यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा या फिर एक साइडवेज करेक्शन आएगा। So whenever you see 8 to 10% fall in gold prices, you should start adding gold in your portfolio. 80,000 के अराउंड है, 75,000 से 72,000 के रेंज में आता है, तो you should start adding it to your portfolio. That will be again 10% fall from here, and जब 73,000 से 75,000 की रेंज में आएगा, दैट विल बी द प्राइस यू शुड ऐड। और उस टाइम आप देखोगे गोल्ड के प्राइसेस अगेन 85,000 और 90,000 की रेंज में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी आर स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यू शुड ऐड एटलीस्ट 5 to 8% डिप पे आपने ऐड करना चाहिए, एंड पॉसिबली नेक्स्ट रैली जो होगी अगेन 30-40% की देखी जा सकती है। Sir, as an investment, which is better, gold ETF or direct gold from the market, which we buy? So it totally depends कि आप अगर फिजिकल गोल्ड लवर हो तो ऑफ कोर्स आपने डायरेक्टली मार्केट में जाके रख के उसको अपने आपके घर पे रखने जैसे, आप इफ यू आर लाइक इन्वेस्टर जिनको फ्यू क्वांटिटीज में अगर ऐड करना है या रखना है, तो ऑफ कोर्स आप कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स या कुछ बार्स आपके घर पे रख सकते हो, बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू ऐड हेवी क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स आप इतने सारे बार्स एंड ऑल आपके घर पे फिजिकल में नहीं रख सकते, राइट। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इफ यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट, देन ऑफ कोर्स गोल्ड ETF इज वन ऑफ द ऑप्शन जो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आप फ्यू क्वांटिटीज में ऐड करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको सामने देखने के बाद वो इन्वेस्टमेंट फील होता है, ऑफ कोर्स देन यू शुड ऐड फिजिकल गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट ह्यूज है तो यू शुड हैव योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF।
So Chandan sir will be joining us in next 2 minutes. Sir, best gold ETF names if you can suggest. So Nippon is one. Nippon का आप gold ETF देख सकते हो, and I believe anyone is looking for silver ETF, तो ICICI के silver ETF available हैं, आप उनमें भी invest कर सकते हैं. Sir, guys, any more question if you have for Ashish sir around gold and silver? Where can we find this report? So Oroji, these are available for our customers, and also for the ease, we will publish this on Stockomo in the resource section. You can access the report shown by Chandan sir and Ashish sir on our Stockomo resource section. After today's session, probably on Monday, it will be available. So Anuj, I We just have- want to add one last thing. Friends, this is the chart of MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसपे कमोडिटी मार्केट के जो कमोडिटीज है वो यहाँ पे ट्रेड होती है. मल्टी कमोडिटीज पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारे ही कमोडिटीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, एंड उनके अभी ऑप्शंस भी आ चुके हैं. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि एमसीएक्स ने काफी अच्छा ग्रो किया है. 2020 में एमसीएक्स में ऑप्शंस लॉन्च हुए थे, एंड सिंस देन एमसीएक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. प्राइस ऑलमोस्ट 6 गुना हो चुका है स्टॉक का, एंड अभी तक तो मंथली ऑप्शंस ही अवेलेबल है. जैसे जैसे इसमें वीकली ऑप्शंस लॉन्च होंगे, पॉसिबली ये जो आप मार्केट देख रहे हैं 5 to 6 टाइम्स ग्रो हो जाएगा. So if you're not tracking the commodity market, if you're a trader who's keenly trading in options, then you come to this particular segment. आपको writing के लिए भी काफी अच्छे opportunities है. I would like to give one strategy. आप 10% आउट ऑफ द मनी क्रूड ऑयल का कॉल सेल कीजिए, 10% आउट ऑफ द मनी का पुट सेल कीजिए. Yield at moment is more than 1.80%. 10% OTM का options है, and this particular option is gonna expire on 15. So 15 days में 10% OTM का 2% के अराउंड का yield है, which is very big thing, कि आपको 2% का yield 15 दिन में मिल जाए. So options का जो turnover है every year, जब से launch हुआ every year the options turnover is getting double. So very big opportunity for the traders and investors. आप of course इसको track कीजिए and you will surely get good result over here. Sir, I guess the trade जो आपने अभी share किया, that was not clear. If you can explain the trade once again, that will be great. So Anuj, this is a writing strategy. ये 15 दिन का मैं ट्रेड दे रहा हूँ आपको. इसमें 5 लाख का मार्जिन लगेगा. आप 6,000 रुपए आज क्रूड ऑयल का प्राइस है. I'll show you the price. So crude oil is currently near 6,000. What I'm suggesting is कि आप 6,600 का कॉल सेल कीजिए एंड 5,400 का पुट सेल कीजिए. दोनों का जो प्रीमियम है विच इज अराउंड 80 और 90, कंबाइन प्रीमियम आपको 80 या 90 के अराउंड मिलेगा, एंड आप दोनों ही सेल करते हो तो 8,000 रुपीज का प्रॉफिट है आपका, एंड 5 लाख के मार्जिन के ऊपर 8,000 इज अराउंड 1.60 1.80 का आपका यील्ड बैठता है. एंड अगेन 10% ओटीएम ऑप्शंस, जो आपको काफी सारे सेगमेंट में 10% के ओटीएम ऑप्शंस ओपन भी नहीं मिलेंगे. सो हियर 10% ओटीएम का ऑप्शंस आप राइट करते हो. ऑफ कोर्स बाइंग ऑप्शंस भी इसमें बहुत है, बिकॉज वर्ल्ड के मोस्ट वोलेटाइल काउंटर्स है यहाँ पे अवेलेबल. नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वर्ल्ड के मोस्ट वोलेटाइल काउंटर्स है. सो बाइंग में भी आपको काफी मजा आएगा. तो यू शुड कम टू दिस सेगमेंट. सो आप एक बार इसका टेस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो बैक फ्रॉम दिस सेगमेंट इफ यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर और इन्वेस्टर. गोल्ड और सिल्वर के लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं. Got it, sir. Thanks a lot for sharing your views and the trades, and it has been a valuable learning for everyone. Thanks a lot, and hoping for more profitable commodity expiries like usual. And we intend, जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि we will increase our commodity sessions and we'll have some learning sessions. तो already हमारी planning चल रही है with Ashish sir. We'll have these sessions soon in the next month. And guys, the wait is over. Chandan sir is here.
So Chandan sir, I request you to please join in the stage, and Ashish sir, if there's anything you would like to add, before we move on to Chandan sir. वन लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड इज फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे भी सिल्वर में क्या लग रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट. ये मंथली चार्ट है, ये इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट है जिसमें $30 पे ब्रेकआउट हुआ है सिल्वर का. यहां से $48 का एक्सपेक्टेशन है सिल्वर जाने का. इफ 48 और $50 इंटरनेशनल मार्केट में अचीव होते हैं तो इंडियन मार्केट में इसका प्राइस विल बी अराउंड 1,50,000. सिल्वर के प्राइसेस 1,50,000. सो यू शुड invest in silver and gold. So Anuj, Thanks that a is lot. all from my side. Thank you so much, and I wish everyone a very good and happy trading session, and I wish again a very happy and golden Diwali to everyone. Thank you, Ashish sir. Thank you. And welcome, Chandan sir. You're looking amazing as always. Happy Diwali, sir. Happy Diwali, Anuj, Mr. Stokomo, and it's a great privilege. आप सभी को शुभ दीपावली और नए वर्ष की शुभकामनाएं. काफी शानदार साल रहा, भले ही पिछले लगभग 22-23 दिनों में मुनाफा वसूली देखने को मिली. कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि द मार्केट ओवरऑल लुक्स पॉजिटिव, भले ही शॉर्ट टर्म मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिले. कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि इस बाजार में थीम पे फोकस करना चाहिए. आज के डिस्कशन में मैं मेजर यही पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए. आई एम श्योर मेरे से पहले सिद्धार्थ, शिवांगी, इन्होंने काफी स्टॉक स्पेसिफिक बात की है, सेक्टर की बात की है. जी सर. और अभी आपने सिल्वर की भी बात की है कि सिल्वर इज गोइंग टू साइन मोर. सो बिल्कुल असेट एलोकेशन रहे. इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 23,300 से लेके 23,500 के मेजर बॉटम बनने चाहिए, और उन बॉटम से कहीं ना कहीं इंडेक्स वापस 25,500 तक के लेवल को छलांग लगाना चाहिए. If you talk about the Bank Nifty index, 49,650 should be the major support to drive this rally to 53,000, 53,500 level. We have positive view in entire capital market sector. Capital market में बात करें तो broking, depository, again आपका exchanges and then AMCs सब पे positive है. Even insurance counter में हम positive है. तो broking की बात करें तो सेलेक्टिव ब्रोकिंग कंपनीज पर फोकस कर सकते हो. डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर बिल्कुल वहां पे रहेगा. आप एक्सचेंज की बात करें तो बीएससी सीडीएसएल पे फोकस करना चाहिए. इनफैक्ट इंश्योरेंस की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ की बात करें या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, उस काउंटर पे आपको फोकस करना चाहिए. तो इस तरह से आपको चुनिंदा नाम पे रखना चाहिए. स्टॉक की लिस्ट में वैसे ही मेजरली बात करूं तो कैपिटल मार्केट से बीएससी सीडीएसएल या कुछ ब्रोकिंग हाउसेस, या फिर एएमसी की बात करें तो यूटीआई एएमसी या फिर आदित्य बिरला एएमसी. कहीं ना कहीं ई कॉमर्स डिजिटल पे फोकस रहेगा, चाहे पेटीएम की बात करें या फिर नीचे के लेवल से जोमेटो पे बाइंग इंटरेस्ट आए. एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू को आप भूल नहीं सकते. कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर पोर्टफोलियो. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पीएसयू में भी थोड़ा बहुत रिकवरी आएगा. पीएसयू में मेजरली आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करेगा. प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक में रिकवरी आएगी. आपको कैपिटल गुड काउंटर पे फोकस कर सकते हो जहां पे ऊपर के लेवल से काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला. पावर एनर्जी की हमने बात की तो टाटा पावर की बात की, आइनॉक्स विंड की बात की. नीचे के लेवल से आप कहीं ना कहीं सीजी पावर पे भी फोकस कर सकते हो. तो मैंने काफी 6 से 8 नाम यहाँ पे गिने हैं जहाँ पे आप निवेशित रह सकते हो. ओवरऑल इंडेक्स की हमने बात की. पोर्टफोलियो एलोकेशन, एसेट एलोकेशन करना चाहिए. थोड़ा बहुत पार्ट आप सिल्वर में या गोल्ड में भी ले सकते हो. ईटीएफ पे भी फोकस कर सकते हो. डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो आप देखोगे 20 नवंबर के बाद में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं. निफ्टी एंड सेंसेक्स विल बी और वीकली एक्सपायरी, बाकी सब मंथली एक्सपायरी रहेगी. सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, बट कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट सेक्टर विल बी पॉजिटिव. इंडिया में अभी लगभग 16-17 करोड़ डीमेट अकाउंट है. हर साल 40-42 हर महीने 40-42 लाख नए डीमेट अकाउंट हो रहे हैं. मार्केट करेक्शन की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डीमेट अकाउंट ओपनिंग स्लो रहे, बट मार्केट सेंटिमेंट एंड सेटअप काफी पॉजिटिव है. सो अनुज, इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन. आशा यही है कि यह साल आपके लिए काफी शुभ रहे, यह संवत काफी शुभ रहे और हम बाजार का इसी तरह एक फायदा उठाते रहे. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 22 सालों में खाली 3 साल दर साल नेगेटिव रहे हैं और ये इंडेक्स का लगातार 9वां साल है जो पॉजिटिव रहा है. तो लंबे समय तक ध्यान रखें. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते रहिए, थीम पे फोकस करें, बट लंबे समय के लिए आप
बाजार में निवेशित रखें, तभी आपको भारतीय बाजार एक बड़ा मुनाफा देता हुआ नजर आएगा, तभी आपको रियल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच अनुज। थैंक यू सर, इट हैज बीन ग्रेट। आपने बिल्कुल ऐसे रैपिड फायर पूरा मार्केट आपने कवर कर लिया। आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग कि चंदन सर कब आएंगे। इट्स बीन अ व्हाइल, यू नो, आप स्टॉकहोम पर आए, एंड आई गेस सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले नए संवत में वो आपको ज्यादा देखें ऑन स्टॉकहोम। काफी लोगों ने लिखा है ये, सो आई अनुज विश मैं कि वी आपको हैव। बताना चाहूंगा कि मैं इससे पहले सीएनबीसी में लाइव था 6 to 6:30, उसके बाद में ईटी नाउ पे लाइव था। ईटी नाउ के लाइव को कट किया क्योंकि मुझे स्टॉकहोम वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रूबरू होना चाहिए था। थैंक्स तो अ लॉट सर। 1 घंटे से सीएनबीसी, ईटी नाउ और स्टॉकहोम में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बाजार की आज की क्लोजिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग की क्लोजिंग हम स्टॉकहोम पे कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आई एम श्योर पूरा टीम आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। और अनुज बिल्कुल जैसा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन सभी व्यूअर्स के लिए हम रेगुलर बेसिस पे हमारा व्यू शेयर करते रहेंगे, कन्विक्शन शेयर करते रहेंगे। अल्टीमेट एम यही है कैसे हम एंड यूजर से कनेक्ट होकर बाजार का कन्विक्शन पास कर सकें। जी सर, थैंक्स अ लॉट सर। एंड आई होप जो मेंबर्स ये देख रहे हैं, जो लोग चैट्स पे लिख रहे हैं, you are excited for the new Samvat year with a fresh outlook on the entire market. And जैसा कि सर मयूर जी ने लिखा है, सर 18 नाउ पे पर्सनल टच नहीं आता, सिर्फ स्टॉकहोम पर ही आता है। So guys, जैसा सर ने कहा, we'll have more sessions. Sir, anything else you would like to add before we end, or probably if we can take few questions? So बस यही बोलना चाहूंगा कि बाजार पे make sure that invested रहे। Always remember that volatility is the part of opportunity and not taking risk is the biggest risk of life. दूसरी चीज ध्यान रखें, in Indian market the downs are temporary and ups are permanent. और आप देखोगे कि पिछले लगभग 22 दिनों में इंडेक्स ऊपर से 2000 पॉइंट करेक्ट हुआ है, उसके बावजूद भी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी भी 12% गेन के साथ है। तो बड़े मुंह के साथ थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में हमने कोई भी करेक्टिव मूव नहीं देखा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो डिक्लाइन आया उसके लिए तैयार रहे, सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करें। हाँ, यदि आपने लिया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, बट क्वालिटी के साथ रहे। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला संवत क्वालिटी को रिवॉर्ड करेगा। पिछले 2 सालों में हर कोई चल रहा था मिड कैप, स्मॉल कैप, हेवीवेट्स, बट अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स और इस पूरे साल में ऐसा लग रहा है क्वालिटी विल रिवॉर्ड वेल। तो इसके लिए आपको बहुत जरूर है कि एक्सपर्ट की एडवाइस लें, स्टॉकों से जुड़े रहें, सेलेक्टिव काउंटर पर फोकस करें, ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप पे नहीं रहें। बहुत सारे स्टॉक में ऊपर से लेवल से करेक्शन आया है, तो ज्यादा एवरेज नहीं करें। यदि क्वालिटी है तो उनमें एवरेज करें, यही मेरी सलाह रहेगी। निवेशित रहे, दूसरों को निवेश के लिए प्रेरित करें। भारतीय बाजार बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तक तो पूरी जनसंख्या का 10 से 11% पॉपुलेशन के पास डीमेट अकाउंट है। हाँ, जरूर कुछ फैक्टर यहाँ पे वर्क किए, जैसा कि चाइना की ग्रोथ की वजह से इंडिया थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ है, कॉर्पोरेट अर्निंग थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। याद रखिए, छोटे से टेम्पररी झटके हैं, इसकी वजह से बाजार सस्ते में मिल रहे हैं। अदरवाइज आप देखोगे पिछले 60 सालों में क्या बड़ी तेजी मार्केट में देखने को मिली। तो थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी आएगी, बाजार अपना बुलिश स्ट्रेंथ बनाता हुआ नजर आएगा। एसआईपी फ्लो भारतीय बाजार में एक बड़ी चीज है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 22 से 25 हजार करोड़ का मंथली एसआईपी देखने को मिला है। तो रिटेल निवेशक यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, और 1 लाख करोड़ की बिकवाली के बावजूद भी बाजार निफ्टी 2000 पॉइंट से ज्यादा नहीं गिरा है। तो ये चीजें माइंड में रखें, एक ऑप्टिमिज्म अप्रोच यहाँ पे अपनाइए, बाजार के लिए पॉजिटिव रहे, ट्रेडिंग करें, बट जब तक एक की लेवल नहीं पार करता तब तक ट्रेडिंग थोड़ा कम करें, फोकस्ड अप्रोच रखें। यही सब आपको सजेशन रहेगा, और ये सजेशन सारे के सारे स्टॉक और सारे के सारे निवेशकों और ट्रेडर पे अप्लाई करता है। काफी गहरी बातें कह गए हैं सर आपकी। वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी हैव टू बी इन्वॉल्व्ड properly. That's a very good point. So guys, that is all for our live Muhurat trading session, जहाँ पे हमने आपको काफी सारी नॉलेज शेयर की। I can see कुछ मैसेजेस की चंदन सर के जो भी सजेशंस है, we need that. So guys, we have just planned कि हम जो हमारा ये पूरे 1 घंटे का सेशन रहा, इसके अराउंड वी आर गोना राइट अ ब्लॉग which we'll share with everyone, every member, and we'll publish that blog for everyone to know हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। We tried कि हम हमारे जो रिसर्च टीम के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, हर टीम से फंडामेंटल, टेक्निकल, कमोडिटीज, हम उनके एक इंपॉर्टेंट पार्ट को ला सकें इस सेशन में, एंड वी स्टार्ट आवर फाइनेंशियल न्यू ईयर विद दीज एक्सपर्ट्स. So that will be all from our side. Thanks a lot everyone for joining in. Thanks a lot Chandan sir. Happy Diwali to everyone. We hope the new Samvat year becomes profitable for everyone. Happy Diwali and thank you so much for being with us, and we are all eager and excited and promise to be with you. Thank you so much. Have a great time. Enjoy with family. मेरी तरफ से एक्स्ट्रा फटाके छोड़िए, और फटाके दिवाली मनाइए तो आज भी मनाइए, and seek the blessings of your loved one.
अनुज, मैंने काफी सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में इंस्टा में भी कुछ अपडेट किया है, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट के रील्स भी डाले हैं, स्टॉकों में भी हम एक्टिव है, तो जितने भी यूजर्स हैं दे कैन स्टे कनेक्टेड एंड वी आर हियर टू हेल्प यू टू डू बेटर, टू work for your wealth creation journey. Thank you so much. Have a great festive time, and we are so much thankful to you for being with us. Thank you so much. Thank you, everyone. Thanks for joining, and see you again on Monday for another session. Thank you. Thank you. Thank you.